हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेबी सीआरबी वाला पे। आज का सेशन विच इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी 10 आउट ऑफ 10। तो ये हमारा 10 सेशन है मॉड्यूल बी के ऊपर। एंड टुडे अगेन विल प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी के ऊपर हम लोग आपका मिक्स क्वेश्चन जिनको प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एंड once we will done with these particular questions, ठीक है, चारों मॉड्यूल्स जैसे ही हमारे पूरे होंगे तो आई कम अप विद केस स्टडीज वाला थिंग, ठीक है। सो जो न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज होंगे उनके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड सेशन आपका करेंगे। सो दैट विल हेल्प यू, जो कहीं ना कहीं आपके ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये भी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके ऊपर भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलो, सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन एनआरआर अकाउंट, ठीक है। तो आज की अच्छा हो गया, इट केम फ्रॉम मॉड्यूल ए एक्चुअली। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज अ मैक्सिमम परमिसिबल टेन्योर फॉर एसएनआरआर अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है। सो टेन्योर की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज अबाउट द टेन्योर, टाइम ड्यूरेशन आपका। तो जब कोई भी एसएनआरआर अकाउंट, इस पर्पस क्या होता है इसका आपका कि कोई एनआरआई अगर उसको इंडिया में, सपोज दैट इफ दे हैव सम बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, तो उनको अगर इंडिया में कोई बिजनेस आपका चलाना है तो उस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो अकाउंट्स का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दे कैन मेंटेन एसएनआरआर अकाउंट्स विद इंडियन बैंक्स इन इंडियन रूपी आईएनआर के अंदर। एंड इट इज मैक्सिमम फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज फॉर 7 years, राइट? So SNRR accounts are a type of accounts that allow to NRIs entities to hold Indian rupee. The regulation regarding the tenure of SNRR accounts stipulated that the tenure of SNRR accounts should be concurrent with the tenure of the contract period of operation or business of the account holders. In no cases, including these, should the tenure of SNRR account exceed 7 years from the date of operating or opening that particular account, ठीक है। तो जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला। दूसरा, how our investment by NRI are broadly categorized. So it is categorized between two parts. One is repatriation और non repatriation, ठीक है। तो इनका मतलब हमने समझा था। वन इज लाइक जहाँ पे दे हैव टू ब्रिंग बैक दैट पर्टिकुलर मनी टू देयर होम कंट्री, और इन केस ऑफ नॉन रिपेट्रिएशन जिनको आपका उसको पैसे को वापस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस दिस कैटेगरी, this include investment made by NRI with the option to repatriate the funds, which means they can take the money back to their foreign country, मतलब जहाँ से भी उन्होंने investment किया है, if they choose to do so. The investment are typically in FCNR and इसके अलावा NRE accounts या फिर PIS. On repatriation basis, this category include investment made by NRIs wherein the funds cannot be repatriated to their own country, ठीक है। जहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वहां पे वो नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is mandatory requirement for Indian and foreign banks intending to set up IP in IFSC banking unit in IFSC according to IFSCA? So क्या होगा आंसर? Proof of minimum 1 million US dollar in capital. No, it is क्या है आपका 20 million. Okay, so this is incorrect. No objection certificates, no objection letter from the host country regulator. Okay, so NOC from a regulator, this is correct. In case of India, it is RBI, so it is true. Letter of comfort from local government or this, no, it is from parent bank, ठीक है। parent bank से आपका होना चाहिए। Letter of comfort, oh sorry, compliances with local tax regulation, compliances with IFSCA. So correct हमें ढूंढना था क्या? Mandatory requirement. So what will be your correct answer? B will be right answer for this particular one, ठीक है। So B will be correct answer in this particular case. Next question, guys. Please quickly go through the question and try to answer this one. Which of the following is not one of the four key objectives of business around EWRM framework is structured? Okay.
तो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट ये एक फ्रेमवर्क जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और BCBS रिक्वायरमेंट, सो बैंक they do have their own model to deal with any kind of risk, ठीक है। सो ऐसे जो भी अनसर्टेनिटीज होती है उनके लिए उन्होंने खुद से आपके डेवलप किए होते हैं। तो जिसमें आपका EWRM मॉडल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसके थ्रू हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं एंटरप्राइज वाइड, एंड बाय यूजिंग 8 कंपोनेंट, ठीक है। जैसा हमने इसको पूरा डिटेल में समझा था। सो अब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो स्ट्रेटेजिक इज पार्ट ऑफ दिस, रिपोर्टिंग इज पार्ट ऑफ दिस, कंप्लाइंस इज दिस, असेसमेंट इज पार्ट नॉट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इसके रिप्लेसमेंट में क्या होना चाहिए था? ऑपरेशनल। So what will be the replacement of this assessment? Your answer will be operational, ठीक है। So we have 4 objectives, तो जिसमें ये सारे आपको, ठीक है, strategic, operations, reporting and compliances, right? So EWRM can be defined as continuous and structured process of listing the objective of organization, identifying all external and internal risk factors that could impact the achievements of objective and organizations business and financial targets. Okay, that's an ongoing process कहीं ना कहीं organization के साथ, so they have to build this particular one, ठीक है। So these are the 8 components which are generally used by the bank or institution or organizations to achieve those 4 objectives, ठीक है। Next one, which of the following pillar of Basel II accords focus on enhancing transparency and accountability of banks? तो क्या होगा? So we have 3 pillars of Basel II जहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया। First one is minimum capital requirement, second one is your supervisory review process, and third one is market discipline. So market discipline which generally focus on enhancing transparency and accountability, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? C will be correct answer for this particular question. Next one, which approach is based on cash flow and ignore the value changes in assets and liabilities due to change in market interest, ठीक है। सो ये कौन सा अप्रोच है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग एट रिस्क, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अर्निंग एट रिस्क, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जैसे हमने RAROC के बारे में बात किया था, ठीक है। तो RAROC और इसमें एक ही डिफरेंस है, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ठीक है। जो इनफ्लोज आपके हो रहे हैं कैसे उनके लिए, बट RORAC इज लाइक उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों माना जाता है? बिकॉज इट जनरली टेक एन अकाउंट अबाउट दी कैपिटल चार्ज, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज आपका कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं आपका चीजों को बताता है, ठीक है। So what will be your correct answer? EAR, earning at risk, depend less on capital allocation and more on cash flow or variability in earnings. It is based on cash flow and ignore the value changes in assets and liabilities due to change in market interest rate. It also depend upon the subjectivity, specific range of the risk environment to drive the worst case scenario. तो इसमें RAROC is like कि अगर हम लोग किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो व्हाट इज द कैपिटल चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर वन, और आपका उससे रिटर्न कितने उनके कंपैरिजन को, बट इट इज ऑल अबाउट दी, अगर EAR की बात करते हैं तो जो अर्निंग्स जो इनफ्लोज है वो कैसे हैं आपके, कैश फ्लोज। नेक्स्ट वन, what is the primary purpose of resident foreign currency account for returning NRIs? तो NRIs आपका किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं इसको? जैसे वहां पे उनकी कुछ अर्निंग है, रेगुलर अर्निंग है, उस चीज को मैनेज करके फैसिलिटीज टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स, to hold foreign currency acquired during their time abroad, to receive pension and retirement benefit in foreign. So क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? C will be correct answer, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा बल्कि C आपका, ठीक है। सो RFC अकाउंट आपका इसीलिए इसी पर्पज के साथ ओपन किया जाता है, लाइक इफ यू जैसे कोई NRI आपका दूसरे कंट्रीज में उसने कोई किसी भी जॉब पे सर्व किया था एंड उसके बेनिफिट पेंशन बेनिफिट्स जो उसको उस अकाउंट्स में आपका वो लेता रहेगा, ठीक है। सो जो उसमें क्रेडिट होते रहेंगे अगर वो अभी इंडिया में भी आ गए, सो दे कैन मेंटेन RFC अकाउंट। What is the minimum regulatory capital required for parent bank including IBU in IFSC? So it is $20 million US, ठीक है। सो ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। और पेरेंट बैंक सेटिंग इन IBU in IFSC must satisfy the following conditions.
under the regulatory framework, which of the following is not a condition? ठीक है, so letter of comfort from parent bank, correct. No objection certificate from home regulator. IBUs are required to maintain retail deposit reserve ratio 3%, correct. IBUs are required to maintain, no, they do not need to maintain SLR and CR. So D will be correct answer for this particular one. Okay, next one. The seller's bank which confirm the authenticity of documentary letter of credit and notify the beneficiary is known by which bank. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, that is the seller's bank confirm the authenticity of documentary letter. Okay, so it is called advising bank. So buyer's bank is basically known as opening bank, okay, और issuing bank. और आपका जो एडवाइजर, जो आपका सेलर है, ठीक है, जिसको बेनिफिट्स आपका जो बेनिफिशियरी मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ एलसी विल बी द बेनिफिशियरी सेलर आपका, ठीक है, तो वो आपका किस में उसको उसका जो बैंक है दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी एडवाइजिंग बैंक, or they can appoint some nominated bank also. ठीक है, next one. Which of the following characteristics does not apply to asset and liabilities in banking book? ठीक है, so BCBS जिसने जो बिजनेस लाइन्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया है 8 कैटेगरीज के अंदर. ठीक है, सो वी हैव 8 कैटेगरीज. दीज आर लाइक जिससे आपका रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इसके अलावा कॉर्पोरेट बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स, एजेंसी सर्विसेज. तो ये पूरे 8 कैटेगरीज, उन 8 कैटेगरीज को रिस्क वाइज आपका कवर किया गया 3 पार्ट्स में, 3 बुक्स में. बैंकिंग बुक, दूसरा आपका ट्रेडिंग बुक एंड तीसरा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर. ठीक है, तो अब बैंकिंग बुक के ऊपर क्वेश्चन है. सो बैंकिंग बुक विच जनरली डील विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस. ठीक है, जिनके साथ ये डील करते हैं. ठीक है, सो डिपॉजिट एंड एडवांसेस दे हेल्ड फॉर मैच्योरिटी विच इज करेक्ट. ठीक है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. सब्जेक्ट टू M2M, नो. Trading book is subject to, trading is subject to this. Accrual system of accounting, yes, it is applied. Attract capital charge for market risk, no, it is for again trading book. ठीक है, तो क्या होगा आपका, does not, so your answer will be B and D. B and D means C will be correct answer for this particular question, right? Next one. Which type of risk arises when a significant changes in market interest rate lead to the payment of cash credit, term a loan, and exercise of call or put options of bond, resulting in a reduction of projected cash flows and income of the bank. ठीक है, तो ये भी मॉड्यूल बी यूनिट 2 आपका जो रिस्क एंड जो आपका रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस है उसका क्वेश्चन है. पिछला वाला क्वेश्चन भी रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस. दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. सो सपोज दैट इफ दैट कस्टमर or like borrower or depositor, if they do have these kind of right ki they can pre-mature that particular one and all, yeah, they can prepay that particular one before the maturity. So we may face these kind of situation. जैसे suppose that हमने एक asset create किया with Mr. A, we gave 1 crore rupees loan for 10 years, 10 साल के लिए, at the rate of suppose that 12% per annum. ठीक है, and suppose that this company A, they have this right of prepayments. So after some time what happened, suppose that the rate of interest came down to 7%. ठीक है, what he'll do, वो क्या करेगा, सिंपली आपका they'll आपका इसका पे ऑफ कर देगा. ठीक है, 12% पे, और they'll shift to 7%. तो ऐसी जो भी situations होती हैं they have these kind of impact. ठीक है, जो आपके बैंक के NII के ऊपर इम्पैक्ट आपका डाल सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन. सो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क इज द रिस्क कनेक्टेड टू फाइनेंशियल एसेट्स that have embedded options such as bond or loans. These options, embedded options, give the issuer or holder of the instrument the ability to do things like prepay the instrument or call it back before its stated maturity when there are major changes in market interest rate. As in the case of the question, borrower may encourage to exercise these particular one. ठीक है, तो जिसको हम लोग embedded option के नाम से जानते हैं. ठीक है, next one. What is the primary risk associated with the Hersted incident in the context of international banking and settlement? So it is
व्हाट टाइप ऑफ रिस्क, इसको आप किस कैटेगरी में आपका डालेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क, ठीक है। तो हर स्टेट रिस्क हमने इसको समझा था आपका, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो हर स्टेट आपका टाइम जोन डिफरेंसेस हुआ था जहाँ पे वो लोग उसको लिक्विडेट नहीं कर पा रहे थे पोजीशन को, सो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, BCBS has agreed upon how many guiding principle on pillar 3 disclosure. So pillar 3 is market discipline. So market discipline disclosures पे कितने guiding principle हैं? So there are 5 principles, ठीक है। 5 principle आपका disclosure should be clear, meaningful, comparable across the banks, ऐसे 5 principle। जैसे disclosure should be clear, comprehensive, meaningful, consistent and comparable across banks। तो ये 5 principle, ठीक है। So guys, like अभी जैसे आज हम लोग मॉड्यूल बी को पूरा कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल डी ना, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक वी आर हैविंग दीज नॉर्मल क्वेश्चन, एमसीक्यूज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वंस वील डन विद दिस, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ों का, एंड जब हम लोग थोड़ा सा रेफरेंसेस आपको देते हैं लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसके लिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। So once we'll done with these particular things, we'll come to the application के based questions और case studies, ठीक है। जो भी आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हैं BFM के अंदर और जो केस स्टडीज आपके हैं, ठीक है। सो विल प्रैक्टिस दोज पर्टिकुलर वन मॉड्यूल वाइज, ठीक है। तो ऐसा ही जैसे आपका ये मॉड्यूल वाइज आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, वैसे ही हम लोग फिर उस पर भी आएंगे। बट फॉर दैट पर्टिकुलर वन बिफोर आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब खासकर जो ऐसे एरियाज हैं जो आपको सजेस्ट किए जाते हैं, गो थ्रू दोज पर्टिकुलर वन। अगर डाउट्स आते तो डाउट्स आप लोग पूछिए, बट थोड़ा बहुत आपको टाइम देके उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, the asset liability management techniques are so designed to manage various risks, primarily aim to stabilize the short term profit, long term earnings and long term substance quality of bank. Which of the following is used to measure the impact of volatility on the short term profit, ठीक है। तो इसमें अगर आप इनको कैटेगराइज करते हैं, if you categorize these 3 areas, first one is to stabilize the short term profit, so we use what we use NII, इनफ्लोज आउटफ्लोज, ठीक है। तो जो बोरोविंग है उस पे आपका आउटफ्लो कितने हैं और जो एसेट्स है उनसे इनफ्लो कितना है, ठीक है। इफ योर इनफ्लो इज ग्रेटर देन योर आउटफ्लो, सो दैट मींस यू हैव अ पॉजिटिव एनआईआई। वैसे ही आपका एनआईएम, तो इट इज लाइक जो भी आपका एनआईआई है डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। और तीसरा आपका होता है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, which will help you, economic equity ratio will help you in long term earning and long term substance, to check the long term earning and long term substance of that particular company। तो इस तरीके से जो अलग अलग डिवीजन आपका बनाया गया। सो हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर था, which of the following is used to measure impact of volatility on the short term? So what will be your correct answer? NII will be your right answer for this, ठीक है। Yes Sandeep sir, very true। Next one, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, NII इज इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट। एंड NII डिवाइड बाय टोटल एसेट इज योर NIM। एंड जो आपका इकोनॉमिक रेशियोज है उसमें बहुत सारे रेशियोज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन, Basel Committee on Banking Supervision published Principle for Sound Liquidity Risk Management and Supervision in September 2008, post this crisis. Which principle of sound liquidity risk management is related to disclosure? अब मैं आपको ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि ये जो बेसल के प्रिंसिपल्स है ना, यू विल नॉट रिमेंबर इन वन गो, तो आपको थोड़ा सा इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द टोटल प्रिंसिपल, उनको कहीं पर राइट डाउन कर लीजिए नॉट, थोड़ा सा उनको बार बार रिवाइज कीजिए। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द रेक्टिफिकेशन थिंग्स एंड ऑल, बट हाँ आप उनको थोड़ा बार बार देखेंगे, चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल 11, ठीक है। सो प्रिंसिपल 11 जहाँ पे, sorry, it was which of the public disclosure, sorry, it was not, so principle 13, the last one, because we have 13 principle, Sandeep, not, it's not C, it's a D actually। so we have total 13 principle and 13th one is the based on this one, okay? So Basel Committee on Banking Supervision published Principle for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. Principle 13, a bank should publicly disclose information on a regular basis that enable market
participants to make an informed judgment about the soundness of the liquidity risk management frameworks and liquidity position. ठीक है, तो इस तरीके से जिनको आप ध्यान रखें. ओके, दिस इज, तो ये आपका मॉड्यूल बी. तो आज हमारा मॉड्यूल बी कंप्लीट हुआ. ठीक है, कल आप लोगों का क्लास नहीं होगा बिकॉज कल हमारे एक स्पेशल इवेंट है जेआईबी के लिए. ठीक है, सो आई सी यू फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड. तो ट्यूसडे से हम लोग मॉड्यूल सी शुरू करेंगे एंड once we'll done with module D, then we'll come to the cases और न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट. ठीक है, तो फिर हम लोग केसेस न्यूमेरिकल्स को आपका प्रैक्टिस करेंगे. बट उससे पहले थोड़ा सा टाइम आप लोग लीजिए और आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ों को थोड़ा बहुत स्टडी करें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें. अगर डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है गाइस, चलो तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधा ट्यूसडे को आपके इस पर्टिकुलर बैच के अंदर, ऑफिसर्स बैच के अंदर, एंड we'll start with module C. Okay, chalo. So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Good night. Thank you.